distinguished guests, respected faculty members, sponsors, partners, participants, and my fellow team members. On the behalf of COEP Technological University and Pune Startup Fest team, I warmly welcome you all to the valedictory ceremony of Vivicta Presents Pune Startup Fest 2026, powered by ONGC. As we gather this evening, we mark the conclusion of an aspiring journey that celebrated innovation, entrepreneurship, and collaborations on the collective spirit of building impactful ideas. Over the past 2 days, Pune Startup Fest 2026 has stood as a vibrant platform where ideas met opportunity and ambition translated into action. It is my distinct honor and privilege to extend a warm welcome to our dignitaries, whose presence greatly enriches this valedictory ceremony. First and foremost, we welcome to our chief guest, respected Dr. Chandubhai Virani, the Managing Director of Balaji Group. Sir, your entrepreneurship journey, visionary leadership, and significant contributions to the industry serve as a powerful source of inspiration for aspiring entrepreneurs and innovators. We are truly honored to have you with us today. Next, we welcome our guest of honor, respected Mr. Parag Pandit Sir, country head at Vivicta. Sir, your industry expertise, strategic insight, and leadership brings immense value to this occasion. We call upon Dr. M.P. Khond Sir, Director, Board of Student Development. Lastly, I invite Dr. P.S. Shinde Sir, the Faculty Advisor of Pune Startup Fest 2026. Now, I'll invite the Secretary of Pune Startup Fest 2026, Nehal Agrawal. And lastly, I'll invite Mr. Preet Damani, the Joint Secretary of Pune Startup Fest 2026. Now, I'd like to call upon Khond Sir to felicitate our guest of honor. Now we'd like to invite Khond Sir to felicitate Dr. Chandubhai Virani Sir. Hello. We would also like to invite Prakash Shinde Sir to felicitate Khond Sir. इसके बाद टाइटल्स में अच्छा क्या क्या We now invite the Secretary, Nehal Agrawal, to felicitate Prakash Shinde Sir. We now start with thanking our sponsors without whom this wouldn't have been possible. Our title sponsor, Vivicta, is a global digital
transforming partner with strong Nordic roots, working across data and AI, cloud, ERP, digital, security, and automation. Vivekta delivers technology solutions that create real-world impact guided by their promise of elevated impact. We are delighted to have Vivekta as our title sponsor, aligned perfectly with our theme, Ascent of Pioneers. Can we have Vivekta's video play? Meet Vivekta, a tech company with a bold purpose. We make every day easier through technology as we enhance the digital core of Nordic businesses and society in transportation, commerce, industries, and municipalities. How? We are with our customers, helping unlock new digital opportunities and elevating their business. What matters to them matters to us. Our long-lasting partnerships and customers' trust in us during critical scenarios are proof that we've done things right. We drive end-to-end excellence, from first ideas to continuous development, from design to delivery. We simplify, industrialize, and improve, delivering what matters most to our customers. With leading technologies, our expertise, and AI at the core, we get their priorities done. With 6 decades of tech disruption behind us, we're always ready for what comes next. We take pride in being a partner with sustainable business practices. Our get-it-done attitude, strong ethics, and engineering mindset empower each of us to make an impact every day. Vivekta. Elevated impact. Can we have a clap for our title sponsor? Next up, I would like to introduce our power sponsor, ONGC. Supporting the vision of our power sponsor is Oil and Natural Gas Corporation Limited, ONGC, India's premier national oil company and an energy Maharatna, contributing over 70% of India's domestic crude oil and natural gas production. ONGC plays a vital role in ensuring the nation's energy security. Committed to innovation and sustainability, ONGC is actively advancing green energy initiatives with a vision to achieve net zero emissions by 2038. Can we have ONGC's video play? India, one of the largest economies and among the biggest energy consumer nations. Its appetite for energy is growing at a pace with its strong growth trajectory. This fast-paced development also means that the responsible nation contributes sustainably to the rise of a healthier, prosperous Indian society. ONGC, since its inception in 1956, has made pioneering endeavors to realize the vision of a proud, self-sufficient, prosperous nation by providing affordable energy, breaking the century-old myth at the very early days of its foundation that no significant oil could ever be found in India today. ONGC is successfully producing oil and gas from Mehsana, Cambay, Ahmedabad, Ankleshwar in Gujarat, Krishna Godavari and Kaveri basins in south to Assam and Tripura in east. Of course, from Mumbai High, the biggest discovery made in 1974, which brought India prominently on oil and gas map of the world, and later significant discoveries of Hira, Neelam and Ratna fields in western waters, and the Basin field discovery in the western offshore, which remains thus far the largest gas field of India. Today we move further and deeper, adopting latest innovations of deep-sea technologies for breaking the challenges of depth, high temperature and high pressure, to bring to production from new gas discoveries of eastern offshore in Bay of Bengal and in Kutch offshore. The latest gems in the series of discoveries include the Bengal Basin that was dedicated to the nation in December 2020. The field is slated to produce rich hydrocarbons, promising further developmental activities in the region. This is the 7th out of 8 discovered basins of India ONGC has put to production. The Vindhyan Basin in Hatta in Madhya Pradesh is the 9th basin of India and the 8th basin discovered by ONGC, which is ready for commercial production.
breaking the technological barriers with adoption of latest innovations in oil and gas engineering and a focused and motivated talent pool. ONGC continues to be a global leader in the E&P sector and one of the most valued Indian national energy company. An equal opportunity employer, ONGC is among the most admired organizations of the country and among the best places to work. In recognition of its role as a responsible corporate leader, ONGC's social outreach initiatives have made positive, tangible difference to the society it engages with, and its efforts are emulated and quoted for inspiration widely. Aspiring to establish its presence in the entire hydrocarbon value chain, ONGC has today created a niche for itself in not just oil and gas, but refining, LNG, petrochemicals and power. ONGC Videsh Limited, the country's largest international oil and gas company, having widespread global participation in oil and gas business, has been contributing significantly to the revenue growth of ONGC. Relentlessly marching ahead with breakthroughs that fuel our journey to realize the vision of a prosperous India. Can we have a round of applause for our power sponsor, ONGC? Next up, I would like to thank SRGF as the strategic partner of Pune Startup Fest 2026, empowering and connecting a network of national security experts and startups, opening channels for Pune Startup Fest's contribution in India's defense ecosystem. Can we play SRGF's video? All right, we'll move forward. Next up, I would like to thank the esteemed alumni of COEP, without whom we wouldn't have been able to make the 8th edition of Pune Startup Fest possible. I would like to thank Atul Lahoti sir, Nitin Paranjpe sir, Uday Kade sir, Prakash Dhoka sir, Vinayak Pai sir, Praveen Vaichal sir, Dinesh Ranawat sir, Shailendra Goswami sir, Pradeep Bhalwankan sir, and Dinesh Kudale sir, to name a few. Can we clap for our alumni sponsors, everyone? I now invite our chief guest, respected Dr. Chandubai Virani sir, Managing Director of Balaji Group, to give a speech. Sir, it's up to you. Good afternoon and Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. मेरे पास कुछ नहीं था, ऐसे लोग मानते थे। ना एजुकेशन है, ना तेरे पास पैसा है। तो इंसान के पास जो कुछ नहीं है ना वही कुछ कर पाता है। तो मेरे को करने की ये मानसिकता थी कि कुछ नहीं है, करके बताऊंगा कि मैं एक इंसान हूँ, क्या कर सकता हूँ। मैं पढ़ रहा था तो मेरे गांव में कुएं में पानी हुआ तो मैं खेती करने चला गया। 2 इयर्स मैंने खेती की, 24 में अकाल पड़ा, कुछ नहीं हुआ। जो बोया था एक बार चला गया, दूसरी बार बोया वो भी चला गया। फिर वो मुसीबत के कारण मैं राजकोट आया। मैं मतलब कौन? चंदूभाई विराणी बालाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड। पहले नहीं था, आज ये हूँ। पहले कुछ नहीं था, ऐसे लोग मानते थे। तो मुसीबत के कारण मैं राजकोट गया, वहाँ मेरे को सेट होना है, ये मेरा गोल था मेरा, कि यहाँ कुछ नहीं है। तो वहाँ एक 1975 में एक उद्घाटन हुआ सिनेमा का। उसमें मेरे को कैंटीन में नौकरी मिली 90 रुपया, बड़े भाई को 150 रुपया। अच्छा काम किया तो कॉन्ट्रैक्ट पे कैंटीन मिल गई।
वहाँ काफ़ी चीज़ें हम बेचते थे, सॉफ्ट ड्रिंक, बिस्किट, चॉकलेट, लेकिन ये नमकीन टाइम पे नहीं मिलता था, इसीलिए 1, 2, 3, 4 सप्लायर बढ़ाया। 7 इयर्स तक वो सप्लायर अच्छी नहीं मिलती थी, तो फिर हमने वो मुसीबत के कारण 81, 82 में गांव की सारी ज़मीन जायदाद बेच के एक मकान बना लिया राजकोट में, और वहाँ हमने चिप्स बनाना शुरू किया, क्योंकि वो सप्लायर नहीं मिलती थी और किराया ज़्यादा था तो नुकसान हो रहा था, इसलिए मजबूरन हमको घर में चिप्स बनाना पड़ा कैंटीन के लिए। और कैंटीन में बनाते, घर में बनाते बनाते कैंटीन में बेचते थे तो थोड़ा माल बचता था, तो मैंने सोचा कि चलो एक नहीं अनेक जगह बेचेंगे। तो बाइक से बेचा, रिक्शा से बेचा, एक टेम्पो लिया, 20,000 की लोन रिक्शा की, 1,80,000 टेम्पो की। फिर इंडस्ट्रीज एरिया में गए, 3,60,000 की लोन लेके 5 लाख में एक फैक्ट्री बन गई 1000 मीटर में। लेकिन वहाँ बेचने जाते थे बाइक से तो लोग मेरे को फेरिया समझते थे, कोई बोलते थे ये तो हलवाई है, तो वो कोई लोग पैसा भी भुलवा देते थे, नहीं देते थे, वहाँ माल वापस देते थे। तो वहाँ परेशानी की वजह से एक मेरे को गुरु ज्ञान मिला कि ये दुकानदार है हमारे कस्टमर है, तो क्या नहीं, कंज्यूमर है ये कस्टमर है, तो वहाँ तक पहुँचना है तो क्या करना पड़ेगा, तो क्या क्वालिटी देनी पड़ेगी, क्वालिटी देनी है तो क्या करना पड़ेगा कंज्यूमर तक पहुँचने के लिए, तो क्या ऑटोमेटिक डालना पड़ेगा। तो हमने 91, 92 में एक ऑटोमेटिक डाल दिया। पुरानी मशीनरी 1 करोड़ में आती थी, यहाँ पूना की एक कंपनी ने, हमने मेथरन प्लेट ने, वो भी नई मशीनरी बना रहे थे, फूड की मशीनरी, पहले चिप्स की नहीं बना रहे थे, तो उसने एक 50 लाख में प्लांट दे दिया, पैसे के मुताबिक और जगह के मुताबिक। तो मतलब आज हमारा जो प्लांट है वो समझो 300, 400, 300, 200 मीटर में है, और ये हमारा समझ लो 100 मीटर में प्लांट बैठ गया। तो जगह के मुताबिक और पैसा के मुताबिक उसने प्लांट बिठा दिया, वो प्लांट नहीं चला। वो कंपनी ये मशीनरी बनानी बंद कर दी फूड की, तो ज़्यादा हमको प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि वहाँ से सर्विस नहीं मिली, और प्लांट भी जो मैं भट्ठा बनाया था वो भी निकाल दिया। तो हमने वहाँ तूतू में नहीं की कि भाई काम करेंगे उसकी गलती होगी, वहाँ अगर कोई टेंशन आ गया तो सुसाइड कर लेंगे तो फैमिली टूट जाएगा। तो वहाँ हमने ऐसा नहीं बोला कि तेरी वजह से हम रोड पे आ गए, अब जो भी हुआ काम करते हैं, उसकी गलती हुई है, उसको गलती को हम दोहराएंगे नहीं, वो गलती को ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर ही आ गया, कंपनी की सर्विस बंद हो गई। तो मैंने और मेरे छोटे ब्रदर कन्नू भाई ने मिलके वो प्लांट 6 महीने में शुरू कर दिया। तो हम प्रैक्टिकल इंजीनियर बन गए। फिर एक एक पुर्दा जोड़ जोड़ के नए नए प्लांट जो जो प्रॉब्लम है सॉल्व करते गए, और आज प्लांट सुधारते गए। आज जो विश्व में किसी के पास प्लांट नहीं होगा ऐसी हमारे पास ऑटोमेटिक मशीनरी है। लेकिन वो पहले हमने मुसीबत के कारण सीखा, फिर वो करोड़, 5 करोड़, 25 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ तक लोन ली, और 15 साल से हमने लोन नहीं ली है, और आज तक हमने 2500 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट किया। वो घर से फैक्ट्री बना के 2 छोटी फैक्ट्री बनाई, एक राजकोट में बड़ी फैक्ट्री, फिर एक वलसाड़ में 50 एकड़ में, एक मध्य प्रदेश में 50 एकड़ में, एक लखनऊ में यूपी में 50 एकड़ में, और 3 फैक्ट्री की जगह ले ली है। तो ऐसे लोन लेते गए, टाइम से पहले भरते गए और लोगों को जोड़ते गए। 5 लोगों से शुरू हमने घर से शुरू किया था, आज 5,000 लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। 5-7 सप्लायर थे और आज 6-7 हज़ार हमारे साथ सप्लायर है। और पैकिंग मशीनरी और बिल्डिंग छोड़ के सारा 80% हमारा सप्लायर कौन है, तो कहीं कृषि रिलेटेड ही है। तो हमारे पास चोपड़ी का ज्ञान कम है, खोपड़ी का ज़्यादा है। तो मेरे पूर्वजों, मेरे दादाजी ऐसे बोलते थे कि बेटा इंसान बन, एक किसान
हम किसान हैं लेकिन हम फसल तैयार करते हैं कितनी धूप बारिश और ठंड में, और जब बिक्री करने जाते हैं तो इसका रेट दूसरे लोग तय करते हैं। एक मोची जूता सीते हैं वो उसका रेट तय करते हैं। तो वो मेरे को मैं समझ थी कि इंसान मैं दादा इंसान तो हूँ ही, ऐसा लग रहा था कि दादाजी की उम्र हो गई है, लेकिन आज लग रहा है कि इंसान कैसे बनना चाहिए कि इंसान मतलब एक दूसरा इंसान हमारे ऊपर विश्वास करे, ट्रस्ट करे, और ट्रस्ट विश्वास से एक ब्रांड बने। तो मैं एक किसानों के साथ जुड़ा हुआ था, तो उसके खेत तक पहुंचता हूँ। यहाँ भी मैं आया हूँ, एक मंचर करके भौड़ी गांव है, बहुत साल पहले एक छोटे छोटे गांव, वहाँ गया हूँ और वहाँ देखता था स्मॉल आलू हमको यूज नहीं करते हैं, उसको फेंकना पड़ता था। तो बहुत साल पहले हमने एक गुजरात में आणंद में प्लांट डाल दिया स्मॉल पोटैटो का, और उसका पाउडर बना देते हैं। ऐसे आहिस्ते आहिस्ते पंजाब में एक प्लांट डाला, 2 प्लांट मध्य प्रदेश में डाला और एक दिशा में डाला, ऐसे 5-6 प्लांट पूरे इंडिया में डाल दिया। तो ये किसानों की समस्या हल हो गई और वो मजबूत हो गए। जो आलू फेंकना पड़ता था या 25-50 पैसा मिलता था, ये पिछले साल 7-8-10-12 रुपया उसको मिला। फिर वो देसी आलू लंबे टाइम तक टिकता नहीं था, तो हमने एक हॉलैंड का लेडी रोजिटा नाम का रेड चमड़ी वाला आलू लाए और किसानों को पुरवार किया और उसको बोला कि ड्रिप से पानी पिलाना है, ड्रिप से खाद डालना है, तो 80% पानी बचता है, 80% खाद बचता है, दवाइयाँ बचती है। तो एक किसानों का लंबे टाइम तक ये आलू टिकता है। तो बड़ी क्वांटिटी में आलू पकाते हैं, तो बड़ा ग्रुप है 100 करोड़, 50 करोड़, 25 करोड़, और कोई कॉन्ट्रैक्ट से हमको आलू देते हैं। तो अच्छी हमको रॉ मटेरियल जो 80% है वो कृषि रिलेटेड अच्छी रॉ मटेरियल मिलती है, और ये चारों फैक्ट्री में अच्छी मशीनरी में प्रोसेस होती है, और कार्टून जो तैयार होता है उसको बेचने के लिए 20 ऐसे ऐसे 1 से शुरू हुआ था। आज 8 बड़े सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके पास 500-600 ट्रक है। वो ट्रक भर के वो 15 से ज़्यादा राज्यों में डिलीवरी करते हैं। किसको? तो कि 2000 डीलर है उसको डिलीवरी करते हैं। और वो स्मॉल डीलर है उसके पास 5 रिक्शा है, और एक बड़ा डीलर है उसके पास 100 रिक्शा है। अपने अपने एरिया में एक एक दुकानों पे डिलीवरी करते हैं। वो 15-20 लाख दुकानों में डिलीवरी करते हैं, और वहाँ से तुम्हारे जैसे करोड़ों कंज्यूमर परचेस करते हैं। हमारे पास कुछ नहीं था तो इंसानियत थी। तो मेरे दादाजी बोलते हैं कि इंसान ऐसा बनो कि तुम्हारे साथ इंसान विश्वास से जुड़ जाए। तो हमारे साथ जो छोटे से छोटा हमारा वर्कर है, छोटे से छोटा हमारा सप्लायर है, आप पूना में देख लेना, हमारा डीलर को मिल लेना, कोई बालाजी का डीलर है वहाँ पहुँच जाना, एक अदर डीलर को मिलना, और आप डीलर को जाके पूछना आप चंदू भाई को बात कर सकते हैं, तो वो बोलेगा हाँ। और वो उसको आप ये पूछ सकते हैं आपको कोई समस्या है तो वो समाधान कर सकते हैं, तो कहा हम कॉन्फिडेंस है। लेकिन आप पूछेंगे फ़ोन किया आपने 3-4 साल में, तो कि नहीं, फ़ोन करना नहीं पड़ता है। ये मालूम है बीच में वालों को कि ये डायरेक्ट बात कर सकता है, इसलिए जो बीच की जो कड़ियाँ हैं वो टाइट हो जाती है, एक इरादा वाली बन जाती है, एक फोकस वाली बन जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ कोई आदमी को टारगेट कोई भी देना नहीं पड़ता काम का या प्रोडक्शन का या सेल का, ना कोई स्कीम है, ना कोई डिस्काउंट है, ना कोई दबाव है। इंसानियत की एक फौज बना दी। इसीलिए आज राजकोट में 7-8 ईयर से नंबर 1 टैक्स पे कर रहे हैं। पूरे गुजरात में स्नैक्स नमकीन में नंबर 1 टैक्स पे कर रहे हैं, और पूरे इंडिया में सबसे वर्ल्ड का स्नैक्स मार्केट इंडिया में है। उसमें ग्रोथ में नंबर 1 ग्रोथ से बालाजी चल रही है। तो हमारे पास इंसानियत की वजह से एक मानव जात की शक्ति बढ़ गई, एक लाखों करोड़ों की शक्ति बढ़ गई। वो शक्ति कब बढ़ी कि पहले फैमिली को हमने बेज बनाया। बिजनेस का बेज कौन है? तो कि फैमिली है। लेकिन फैमिली में क्या हुआ है? महाभारत भी हुआ है, फैमिली में रामायण भी हुआ है,
महाभारत कहता है मेरा मेरा हूँ करके मर गए। रामायण में बोला कि ये सब तेरा है, सब हमारा है। वो एक ताकत से जुड़ गए, नहीं तो शक्तिशाली ये कौन था? तो रावण था। रावण में हूँ पना था, इसके पास साथीदार नहीं थे, राम के पास साथीदार था। तो हम कुछ भी करेंगे तो हमारे पास मैंने ये डिग्री पाई है ये नहीं करना है। कोई स्टूडेंट के परसेंटेज कम है लेकिन उसके पास भी काफ़ी पड़ा है शक्ति, उसको हमको जागरूक करना है। कोई भी प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तब वो शक्ति जागरूक होगी। एक इंसान बन के एक घर में पहचान होती है, एक हमारे एरिया में पहचान होती है, शहर, राज्य और देश और वर्ल्ड में हम पहचान करेंगे तब एक इंसान मरने के बाद जिंदा रहता है। इंडिपेंडेंट डे के दिन हम किसको याद करते हैं कि वो मरने के बाद जिंदा है, आज भी उसको याद करते हैं, तो उसको बोलते हैं इंसान। अब मेरे को लग रहा है कि मेरे दादाजी ने जो संस्कार दिया वो आज काम लाया और एक ये संस्कार की वजह से एक बड़ा शक्तिशाली संगठन बन गया। तो ये बालाजी की हिस्ट्री 50 साल की हिस्ट्री है, मैं बोलता रहूँगा तो ख़त्म नहीं होगी। आपको कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं, क्योंकि नहीं तो आपको टाइम ज़्यादा नहीं मिला। मैंने तो आपके लिए राजकोट छोड़ के, मेरी फैमिली को छोड़ के 48 घंटे आपके लिए वहाँ छोड़ के आया हूँ। मैं तो आपका हूँ। आपको टाइम होगा तो मैं जो भी आप क्वेश्चन करेंगे उसका जवाब देंगे। थैंक यू, आभार। कोई है सुविधा? माइक है अंदर? माइक पास हो जाएगा सर। पास हो गए, टाइम जाएगा। नहीं है, ऑडियंस में माइक है सर। पूछिए। थोड़ा आगे आ जाइए ना, कोई माइक पर। माइक को मैं अभी कॉन्फ्रेंस रूम में इनसे बात कर रहा था, तो हमको पता है बालाजी ग्रुप एंड बट इनसे जब बात कर रहा था तब रियलाइज़ हुआ इतनी सिंप्लिसिटी है, इतनी सिंप्लिसिटी हमने देखा है भी। मैं कुछ ये नहीं बोलूँगा बट अभी इलेक्शंस भी हुए एंड ऑल, तो हम छोटे लेवल पे भी हम लोगों को नहीं मिल पाते। ये इतने बड़े आदमी है, ये इतने सिंपल कैसे है, ये मेरा सवाल। सिंपल बना है नहीं जाता, वो कर्मों का फल होता है। मेरे दादा परदादा, मेरे फादर, मेरी मदर, उसका एक डीएनए आया होगा, इसलिए मैं सिंपल बन सका। सिंपल बनने जाएंगे ने तो वो नाटक हो जाएगा। वो रियलिटी होती है, आती है, बनना नहीं जाता। हम अगर अच्छा कर्म करेंगे तो हमारे बच्चे ऐसे होंगे। आई थिंक ये सीखना चाहिए हमने, कर्मों का फल पूर्वजों का। थैंक यू। है कोई क्वेश्चन वाला? मेरे को कुछ दिखता नहीं है। आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं खाली जवाब ही दूंगा। हेलो सर, जय श्री कृष्ण सर। हाँ, जय श्री कृष्ण। सर मेरा क्वेश्चन था कि सर आपके लाइफ मैंने पॉडकास्ट पे देखा, तो आपकी लाइफ में ऐसा है कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम आई आपने उसको अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। बट एज ए स्टूडेंट मेरे पास कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं लेके बैठ जाता हूँ कि कैसे बाहर निकलूं। लाइक आपका माइंडसेट क्या है कि आपकी हर प्रॉब्लम आपने अपॉर्चुनिटी में बदल दी? देखो, इंसान पूरी गेम जीने की माइंड है। माइंड में प्रॉब्लम करते रहेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। प्रॉब्लम से ही हमारी जिंदगी बढ़ती है। तो प्रॉब्लम को बड़ा मत करो। प्रॉब्लम से गुरु ज्ञान लेने के लिए प्रॉब्लम आता है। जिसको प्रॉब्लम नहीं आता वो इंसान नहीं बन सकता। वो एक सपोर्ट की वजह से चलता रहेगा। जब हम खुद सोल्व करेंगे तो हमारे माइंड सेट मजबूत बनेगा, हमारा शरीर मजबूत बनेगा, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सोल्व करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ तो कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब समस्या आती है, उसका सोल्व करने की शक्ति भगवान देता है। लेकिन उसको अगर ज़्यादा हो गया तो हनुमान चालीसा बोलने लगो तो शक्ति बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम से तो पूरा जीवन है।
वो तो पार्ट बनाओ जीवन का, प्रॉब्लम मत बनाओ। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। सर मुझे ये प्रश्न था, एज ए स्टूडेंट हम जब कॉलेज में रहते हैं हमें अपने कॉम्पिटिटर्स से बहुत जेलिसी एंड ऑल होती है, तो जब अभी मतलब आप जब इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए हो तो आप अपने कॉम्पिटिटर्स से लाइक कैसे डील करते हो? लाइक आपने सुना होगा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हमारा हल्दीराम है, उसकी फैक्ट्री जल गई थी तो हमने माल बना दिया, उसको जिंदा रखा। इसलिए जिंदा इसलिए रखा कि हम राम बनेंगे, सबको खत्म कर देंगे तो हम रावण बन जाएंगे। तो हमको क्या बनना है? कॉम्पिटिटर से सीखना चाहिए ना। कॉम्पिटिटर ही हमको सिखाता है कि उससे कुछ अच्छा करो। हमने कभी आप यहाँ पुणे में देख लो, 1% डिस्काउंट से हमने बेचा कि कोई या दूसरी कंपनी है उससे हमको ₹1 डिस्काउंट कर देंगे, कल वो 2% कर देंगे, हम 3%। इससे कुछ अच्छा दीजिए, इससे अच्छी प्रोडक्ट दीजिए, इससे अच्छा सर्विस दीजिए, इससे अच्छा पैकेट दीजिए, पैकिंग दीजिए। तो वो अच्छा करवाने वाले कौन है? कॉम्पिटिटर ही है, नहीं तो रावण बन जाएंगे। तो कॉम्पिटिटर हमको राम बनाता है, तो वो उसको सामने रखिए, वो आपको देखेंगे। देखता हो मोबाइल में देखा होगा, हमने हर कॉम्पिटिटर को माल बना दिया। Can we have one last question because we are in a time crunch? नहीं तो आगे आ जाओ 2-4 लोग, क्योंकि नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। अभी मना कर देंगे, टाइम खत्म हो गया। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड। मेरा नाम श्रेयांश ललवानी है। मैंने अभी नया कंपनी स्टार्टअप चालू किया एक्चुअली, इधर हमने स्टॉल लगाया था, पुणे प्रोटीन कंपनी नाम से है। तो मुझे ये सवाल है सर, हमने जैसे चालू किया है तो सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन पहले हमने सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे करना चाहिए या इमीडिएटली वी कैन मूव ऑन टू टियर 1 एंड टियर 2 सिटी? नहीं, हम एक तालाब में पत्थर फेंकते हैं, जैसे लहर चलती है ना उसी तरह चलो। अभी हमने देखो सबसे ग्रोथ में नंबर 1 चल रहे हैं, फिर भी हमारा 60-70% इंडिया खाली है। तो हम पूरे पैन इंडिया नहीं बने हैं, हम दिखावा करते हैं हम पैन इंडिया में, ये दिखावा करते अभी का ग्लास खाली है, बहुत भर सकते हैं। तो स्लोली चलो। हमारी ये स्टोरी है ना, वो खरगोश और कछुआ, बराबर है। तो आगे कौन जाएगा? मजबूताई से चलना, स्लोली चलना। ऑल्सो सर हमने डिफिकल्टीज बहुत फेस की है, तो हम लोग ये डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, और सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो सिटी और स्टेट में है, तो इसके लिए आपके लिए क्या सोल्यूशन होगा आपके पास? देखो सब कुछ सॉल्यूशन है, मेरा नंबर मिल जाएगा, अभी मैं बाहर निकलूंगा, बातें करेंगे। जहां प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है। माइंड सेट होना चाहिए कि हम करके रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। आप जितना काम करते जाएंगे प्रॉब्लम आता रहेगा, सॉल्यूशन करते रहेंगे, कुछ टाइम पहले सॉल्यूशन करने वाला मिल जाएगा। हमारे पास लाखों करोड़ों लोग सॉल्यूशन वाले मिल गए, आप वो सॉल्यूशन करते जा रहे हैं। लेकिन पहले आप बेस बनाओ, ठीक है कोई बताइए? 2 माइक रखिए, बोलिए। यहाँ है। हेलो सर, जो इंसान होता है वो अपने डिसीजन की वजह से होता है। लाइक कभी सिचुएशन आती है हमारे जीवन में तो हम ए और बी में कंफ्यूज रहते हैं और ए लेते हैं, तो उस हिसाब से आज हम बने हैं। तो कभी कभी किसी डिसीजन में रिस्क भी होता है ज़्यादा। तो सर ये आप ये बता सकते हैं, मतलब आप अपने लाइफ में डिसीजन कैसे लेते हैं, मतलब क्या पैरामीटर्स पे लेते हैं? देखो ऐसा रिस्क लेते हैं कि हम रोड से आए हैं, रोड पे फिर चले जाएंगे, तो सिंह चना खा के जी सकते हैं, टेंशन नहीं लेंगे। पहले ये करते हम। अगर सारा चला गया तुम्हारे पास हाथ पैर तो रहेगा ना, हाथ पैर रहेगा, 2 रोटी नहीं कमा सकते हो। तो पहले ये मानसिक रहो और कैलकुलेटेड रिस्क रहो कि ये सारा चला जाएगा तो हमारे माइंड पे नहीं आना चाहिए। इतना रिस्क करो, कोई रिस्क नहीं है। थोड़ा रिस्क लेना ही जीवन है, लेकिन माइंड पे नहीं जा सकता रिस्क। इतना रिस्क लो, कितनी आपकी माइंड की शक्ति है।
मेरी शक्ति तो थी, मैं रोड पे चला जाऊंगा लेकिन टेंशन नहीं लूंगा, सिंग चना खाऊंगा तो प्रोटीन मिलेगा। काजू बादाम से प्रोटीन नहीं मिलता। मानसिक सेट है तो कुछ भी खाओ प्रोटीन मिल जाता है। मानसिक पूरी गेम है। मानसिक टूटना नहीं चाहिए, मानसिक मत टूटो। भगवान ने बहुत हमको इंसान बनाया है, जो 84 लाख जीवों में से जो मजबूत से मजबूत जो जीव है वो मानव जीव है। तो आप मानव बन के रहो। ना आप छोटे हैं, ना बड़े हैं, ना अमीर है, ना गरीब है। क्योंकि सबके पास 2 हाथ होती, 2 आंखें होती, एक दिमाग होता है, लेकिन दिमाग तोड़ने वाला कभी आगे नहीं जा सकता। कोई भी बोलेगा मेरे को फेरिया बोलता था, मेरे को हलवाई बोलता था, वो तो उसका विचार था। बोलते रहो। मैं अड़ग रहूं, मैं अड़ग रहा। ये बिजनेस लोगों के लिए पागल था। मेरा बच्चा पागल है तो मैं चेंज नहीं करूंगा, ये बना के रहूंगा। ये मानसिक सेट था। 50 साल में एक ही बिजनेस किया मैंने। तो मानसिक मजबूत रहो। और है कोई? सर, आपने अपनी जो हिस्ट्री बताई वास्तविक में सुनने, समझने और अनुभव लेने के लायक थी। आज के इस अवसर पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने ये बिजनेस जो शुरुआत की तो ये सेल्फ मोटिवेटेड रूप में किया या किसी और से इंस्पायर होकर किया? जहाँ जहाँ तकलीफ आती गई सोल्व करता गया। मैं तैयार चिप्स बेच रहा था, 1, 2, 3, 4 सप्लायर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो हमने बोला अब बनाना ही पड़ेगा। तो घर में बनाते थे, वो कारीगर ऐसा आता है नहीं आता, तो कभी मैंने बोला मैं खुद बैठ जाता था, 2-4 पर बिगाड़ा, फिर सीख लिया। जहाँ मुसीबत आई वहाँ सीखा मैंने। देखो, मैं आज भी इतना बड़ा बन गया लेकिन किसी से पानी का गिलास मांगता नहीं हूँ, मैं पी लेता हूँ खड़ा होके। तो हम कभी जो भी प्रॉब्लम आती है उसको सोल्व करो, ऑर्डर मत करो, जिम्मेदार बनाओ, सेठ बनो, साथीदार बनाओ। मैंने आज इतने मजबूत साथीदार बना दिया तो मेरे से भी कई गुना डिग्री वाला भी समझता है कि चंदू भाई हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है। ऐसी मानसिक सेट हो गए सब। तो उसकी वजह से आज मेरे पास बहुत शक्ति बढ़ गई। हमारी न्यू जनरेशन एजुकेटेड वाली है। हमारे पास ये टीम है, 25 अलग अलग डिपार्टमेंट है, अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। तो वो आज भी मैं देखो फैक्ट्री जाऊंगा, हर दिन जाता हूँ। हमारी प्रोडक्ट है, एक बच्चे की तरफ है, एक मेरा पैशन है, मेरा जीवन है। हम लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं करते, हम नारायण नारायण करते रहते हैं तो लक्ष्मी अपने आप आती है। अब पैशन मत छोड़ो। ये जीवन कुछ करने के लिए है, खाली पैसा कमाने के लिए नहीं है। एक ऊंचाई पे आप बन जाओगे तो बहुत शक्ति आपके साथ जुड़ जाती है। और बताइए। सर के अनुभव से एक बात और, एक उदाहरण थोड़ा सा बदलते हुए दिखा मेरे को। जैसा कछुआ और ससे की जो कथा थी, तो कछुए की गति कम रहती थी और ससे की गति ज़्यादा रहती थी, तो आगे जाके वो रुक जाता था क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि मेरा कॉम्पिटिटर बहुत धीमा है। लेकिन सर ने उस चीज को बदल दिया और है। कॉन्फिडेंस था। हाँ, वो अभी दुनिया नहीं बनना है। अभी दुनिया बदल गई है, ऐसा लगता है बिल्कुल सर के अनुभव से, कि अभी वो जो स्टोरी है वो चेंज करना पड़ेगा। अब जैसा अगर नदी आ गई बीच में तो कछुए ने साथ देना चाहिए ससे को, और अगर ग्राउंड आ गया तो ससे ने साथ देना चाहिए कछुए को अपने ऊपर बिठाल के लिए आने का। तो ये एक दूसरे के कोऑपरेशन से अपन आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे सर के माध्यम से हमें सुनने मिला। थैंक यू सर। सर, सवाल तो बहुत होंगे, इसे मैंने बोला जरा सर हम सभी को टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। पूछने सर है? हाँ, मैंने पहले बोला था मेरे लिए टाइम इन लोगों जय को श्री चाहिए। कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। मैं शिल्पकार ललित धन में हूँ, हाँ। करा स्टूडियो का डायरेक्टर हूँ।
हम लोग राष्ट्र की धरोहर मतलब शिल्प बनाते बड़े बड़े, तो इस कई संस्थाओं के साथ हम लोग काम करते हैं, सरकारी निम्न सरकारी संस्थाओं के साथ। इनमें हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है वो कैपिटल का, फाइनेंस का। तो इसमें आपका क्या सजेशन होगा, कैसे हम लोग इसमें डील करें? देखो, जब मेरे को ज़रूरत थी फाइनेंस कोई नहीं देता था, आज नहीं ज़रूरत है, लाखों लोग फाइनेंस देने वाले हैं। तो थोड़ा वो आप बनाओ ऐसे, थोड़ा ऐसे ब्रांड बनाओ कि फाइनेंस वाला लाइन लग जाए। नहीं तो फाइनेंस की ज़रूरत नहीं, कंपनी में शक्ति होनी चाहिए। आप थोड़ा छोटी छोटी जो लीकेज होती है फाइनेंस में, जो डिस्काउंट देते हैं, क्वालिटी नहीं बनाते हैं, इसलिए डेबिट में देना पड़ता, तो छोटी छोटी चीज़ों से एक स्टोन से पार बनती है, एक बूंद बूंद से पैसों का सागर बनता है। एक शक्ति बन गई ना, तो किसी की ज़रूरत फाइनेंस में नहीं पड़ेगी। आपको वो प्रोडक्ट ऐसी तरह बनाओ कि आपकी डिमांड बढ़े, आपके यहाँ आने वाले एडवांस ऑर्डर आने लगे, तो अपने आप फंड एडवांस मिलेगा। जो हमने क्या किया, कंज्यूमर के लिए किया। जो दुकानदार थे परेशान करते थे ना, कंज्यूमर की डिमांड की वजह से हमने जो डिस्काउंट देना बंद कर दिया, डेबिट देना बंद कर दिया, स्कीम देना बंद कर दिया, तो वो उसके कारण बहुत प्रॉफिट बढ़ गया। हमारे पास सालों सालों तक प्रॉफिट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतनी कंपनी स्ट्रॉन्ग बन गई है। 3 साल अगर प्रॉफिट नहीं करेगी बालाजी, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी ताकतवर बन गई। तो ये कंज्यूमर की डिमांड की वजह से। तो इसी तरह कंज्यूमर कैसे आपकी शिल्पकार की डिमांड करे, उसको समझो आप कंज्यूमर को। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर, आपके लाइफ लेसन्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत सारे प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट भी करने हैं अभी आपको। कैन आई कॉल अपॉन अवनी वाइकर, माय co-host, to start the prize distribution ceremony? Now I'd like to invite Mr. Chandubhai Virani sir to felicitate the event winners. Starting with brand scan. Starting with Clear Hair and MD presents brand scan. The second runner-up is Pranjal Rathi. The first runner-up is Jayesh Gharde. And the winner is Yash Parekh. Second. Now I'd like to announce the winners for Innovators Relay. Sir, MP Khond sir, can you please felicitate the winners? So the winners for Innovators Relay are, first runner-up is Saurabh Yadav, Pratham Siddham,
Raj Rasne and Diksha Yadav. And the winners are Namrata Kurhade, Prince Valecha, Om Dighe, Yash Patil. Now for the winners of Coding Minutes present Spectra. The second runner-up are Shreyash More and Aryan Hinge from Team Denner. The first runner-ups are Karan Vakchure, Tanisha Ranjane and Harshal Gadge from Team Drishti. And the winners are Lakshit Raj, Pranav, Aditya Sai from Silent Com team. Now I request Mr. Parag Pandita sir for the felicitation of our next event, the Courtroom Clash. The second runner-ups, the first runner-ups are Parth and Tanvi. And the winners are Pradnya and Devika. Now the winners for bid was our second runner-ups are Pushpak Pawar and Vindayak Kalshetty. Okay. The first runner-ups are Om Ingulkar and Sarang Kulkarni. And the winners are Chetan Pathade and Vishambar Joshi. Now for the winners of Survive and Thrive. Our second runner-up are Saurabh Yadav, Rishabh Dev Verma. The first runners-ups are Shreya Bhagwat, Mayur Kapoor and Snehal Dhaigude.
And the winners are Parth Patle, Rachita Rao, Swapnil Sakhare, and Samruddhi Patil. Now for the winners of CEO Challenge. Our second runner-ups are Sia Pawar, Abhishek Bijargi, and Tanmay Patil. Our first runner-ups are Aryan Agarwal, Rick Gonsalves, Minoti Dighe, and Apurva Gokhale. And the winners are Akshay Sathe and Shwetar Kulkarni. Now for the winners of Optify. For video, the winner is Pranav. For logo, the winner is Smith Bandekar. And for photography, it's Sushant Sevankar. Parag sir, you may please take a seat. Now I request Mr. Chandubhai Virani sir to continue with the felicitation. Our next event is Bull Run. The second runner-ups is Neeraj Patil. The first runner-up is Sumed Kuralkar. And the winner is Navneet Singh. Our next event, Shishya. The second runner-up, Ananya Bilgikar. The second runner-up, Shinjini Das Gupta. And the winner, Geetansh Gade. Our next event, Fund Arcade. The second runner-up for Fund Arcade is Shriyash Sunil Masalkar, Dhanashri Kochar, and Rohan Barlota. The first runner-up is Harshal Rajankar and Aryan Bayaskar. And the winner is Sushrit Kale, Shaurya Thorat, and Sukrut Dusne.
Now the zone winners. From Health and Lifestyle, we have Pune Protein Company. For Green and Agri, we have Plant MedPro. For Defense, we have Kahara. The Tech Zone winners are DBTM. The Education and Social Zone winners are Indic Inspiration. From the Student Startup Zone, the winners are Fix This. And for the IIPR zone, we have Craigsie. Pune Startup Fest heartily congratulates all the winners. We would now like to call upon our guest of honor, respected Mr. Parag Pandit Sir, country head at Vivikta, to give us a speech. Can I stand there? Or? Yeah. That's better. Screen dikhna. Right. Hello. Hello. I hope. Is it working? Can you hear me? The volume a Okay, little? good. Do you have a navigator presentation? नहीं. Operate करेंगे presentation है. Okay, you will change it. Okay, fine. Fine. So, hi everyone. After, first of all, sharing a stage with sir is really great honor. I mean, as I said, he is very simple person, and when we look at the growth of Balaji Group and the way they have done, and then they started, and I had a really good discussion, and thanks for even COEP for that. So, professors, I really thankful to all of you, and thanks for staying for a long period. And I will try to wrap up in maybe 15 minutes, but just would like to give you about Vivikta company, who we are basically. So we are an IT services company, more than 7,000 employees in the organization. What we do is we provide full stack end-to-end IT services, which is application and infrastructure services. So we are more than 7,000 employees globally. In India, we are around 1,400 employees. Based in Pune, more than 1,300 employees. And we have a great long association with COEP, where we are acquiring all great talents from you for many, many years. We are really proud that we are in Pune city, and when I pitch, our company pitches to salespeople or the customers who visits us, I always put COEP, like the premium institute we have, and we have these talented students coming out every year. So please keep up that spirit and keep us proud.
If you move to the next slide. So we are based in three main market countries, which is Sweden, Finland, and Norway in Europe. So our core market is these three countries. And if you look at the amount of work we are doing as a company, because Vivicta initially was a Tieto Every or Tieto company. Very recently, IT services part has moved out, or we sold to private equity called Agilitas. So the amount of, or the history Vivicta has now is more than 60 years. Since 1960, we started in Finland and Sweden, and then we scaled up in India and other countries as well. So India plays a key role, and I am representing India country. So the amount of impact we make on the society, you can see in all three countries. If you look at the transportation, we manage more than 40% of our regional healthcare and transportation services in Sweden. And Sweden is a country, and it's a very rich country, I would say, relatively. And at the same time, if you look at the amount of work we do and impact we make, it's quite significant. Then we are processing 5 million invoices every day for all our city of Stockholm, which is a capital of Sweden. I'm sure you may be aware. Then in Norway also we make the same impact for pensioners, because we have been managing, because in at least if we compare, if you are not aware, in India we have only government employees gets pension, or private employees we have normally go for private pensions and all. But when you look at in Europe or in Nordic countries, every person who works, either a taxi driver or anything he or she does, they are eligible for pension at the end of their career. So pension we manage, that plays a significant role. So you can see all these numbers. Insurances we manage also for mainly Norwegian customers of Norway. And then in Finland as well, we have been working with forestry, manufacturing. Forest industry is same as, you know, historically Finland was or they had forest industry as the start of the, before even manufacturing era and all. So like we had, or we have still agriculture sector. So we are managing that for many years. And then also in retail sector, we have been delivering quite many retail services to our customers. If we move to next slide quickly, I will. Yeah, so very recently we launched our, please go back. Very recently we launched our new brand called Vivicta. So I'm sure Tieto Every in Pune, everyone knows. But when we talk about Vivicta, this is our new brand. And if you look at the name and the significance of it is what shows about the Nordic or Northern culture and Nordic culture. So let's move to the next slide quickly. So these are the services we provide. If you are from maybe electronics, telecom, or computer, or the software engineering course, then I'm sure you can understand these terms. Like data, AI, and automation we deliver to our customers. Then cloud and infrastructure services. We have been quite significantly delivering services on infrastructure, our own data centers in Nordics for many years. But now we are moving to cloud, our own cloud as well as public cloud platform. And then we are also providing mainly the application modernization services to our customers. If you move to the next slide. Yeah, maybe we can skip this. I will not extend a bit. And then we have a very strategic level partnership with selected partners or tech partners like Microsoft, SAP, Oracle, and AWS, Red Hat. I'm sure most of you are aware and working on this kind of technology platforms as such. If we move to next slide. This is the history of India as such. So we are here, as I said, Vivicta is there for more than 60 years. We have built the systems for many customers in Nordics because our presence was mainly in Finland, Sweden earlier. But now when they started working with India, then it is more than 28 years we are here in Pune as our primary site. And then we also have Bangalore and Chandigarh as our kind of specialized skills we have in those cities. But then Pune, we are more than 1,300 employees, very close to COEP, not that far. Our office is in Eon, Kharadi, which is SEZ zone as such. If we move to next quickly. And then when somebody says, or it is always misinterpreted, that's why I thought I will talk about this slide specifically, is India, we work as a
I mean, historically or many years back, we have made a global organization. So it is not about India as an organization. And if you look at many companies outside, they only do certain type of work. But when we look at our organization, we are a bit integrated one, which is like we work as a single team with Europeans and Indians, and we don't feel any difference. That's the culture we maintain. So that's why all types of work we deliver, whether it is advisory, consulting, maintenance, managed services, and so on and so forth. And then we have a very high level of partnership with this Chamber of Commerce, like Finnish, Swedish, and so on. If we move to next one. Yeah, then there are quite many activities we do with related to our employees, because if you look at Nordic culture, focus is more on individuals and employees. So we value individuals rather than calling them as a resources or people as such. So experts are important and employees are very important for us. That's why we do quite many activities. You can see all are listed here about the employee kind of benefit or employee activities to engage more employees and do outside of office work rather than just focusing on sitting on laptops and doing the technical work. If we move to next slide. And then there are corporate social responsibilities which we do, and as a part of that also I'm standing here to represent my company as such. And very high focus on environment. As you know, US, Europe, and even India is very highly focusing on sustainability, reusable energy, and all that, which we invest a lot in India as well to also work for our nation. Yes, please go to the next slide. Yeah, you can move to next slide. Please move to the next slide. I think, and then there are some endorsements, some partners I already talked about. And if you move to the next slide, then these are our endorsements from the recognition from all the global ISG providers and analyst firms and so on, which helps us to deliver these standardized services with our customers. And we get upper hand when you are having this kind of certifications and endorsement from the different global standard firms. If we move to next one. Yeah, if I just scan through quickly for 30 seconds about the success stories, as I talked about, we do a lot for Nordic society like City of Stockholm, a lot of work, infrastructure related and so on. Then insurance, Ilmarinen, then S Group, which is retailer. Please move to next slide. And then Outokumpu manufacturing customer we have, and then Aker BP, which is oil and gas. This is a sector where we are hiring also oil and gas experts, mainly from the petrochemical engineering and so on as well. And then UPM, which is on the forestry side. Okay. Yeah, and municipalities and regions and government. Please move to next slide. Yeah, so just to close before, very important thing is about people. And we deliver services which are purely experts based in India and globally as well. So we trust on employees and people and expertise. And we are hiring quite many experts, whether it was in SAP area or in AI area or in engineering pass outs, graduates and interns we are taking quite regularly. And we have great plans. Obviously last 2-3 years has been a different situation for us and all industries, as you know. But then there are great plans to scale up and grow. So I would encourage all of you to apply, and we will always list to you. And we really need top talents from these colleges, and definitely it will help us to grow, and that's what I am here for, and I'm sure we will have a great journey together as well going forward in future. Thank you. Thanks a lot. Thank you, sir, for letting us know about the amazing company Vivekta. Now, I would like to call upon Khon sir for his short speech. इन्होंने मुझे पहले ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया है शॉर्ट स्पीच के लिए, तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं आपका। मैं यहाँ पे सबसे पहले बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ चंदू भाई का कि उन्होंने यहाँ पे आके एक रियलिस्टिक एंटरप्रेन्योर की क्या स्टोरी हो सकती है इसके बारे में हमें जानकारी दी। मैं पराग पंडिता का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने स्पीच में उनके कंपनी के बारे में जो भी जानकारी है वो देने की कोशिश की, और साथ में
इन दोनों का भी इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ कि आज के इस वैलिडिक्टरी फंक्शन में उन्होंने अपनी शोभा बढ़ाई है। सबसे अहम बात यह है कि मैं यहाँ पे जो खड़ा हूँ वो इसलिए हूँ कि मैं ना ही कोई आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में कुछ ज़्यादा बताने वाला हूँ, बल्कि मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं मेरे टीम का मोटिवेशन अगले स्तर पर लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि जिन्होंने पिछले 6 महीने से लगातार मेहनत की, आई एम रियली अप्रिशिएटिंग द टीम PSF। सो राउंड ऑफ एप्लॉज फॉर टीम PSF। मैं एज एन डायरेक्टर बोर्ड ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट कुछ चीज़ों के बारे में ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया और कैसे ये सब चीज़ें एक राइट डायरेक्शन में गई है। आज यहाँ पे जो लोगों ने ये फेस्ट ऑर्गेनाइज किया है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि इसमें से बहुत से लोग एंटरप्रेनर बनेंगे। तो इसमें सबसे अहम बात होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट है, टाइम टू टाइम डिसीजन लेना है, लोगों के साथ कन्वे करना है, इनके साथ इंटरैक्ट करना है। तो इन सभी मामले में PSF के टीम को मैं AA ग्रेड देना चाहता हूं, और AA ग्रेड की अहमियत आप सबको मालूम है। आज के इस मौके पर चंदू भाई वीरानी साहब ने एक बहुत ही अहम बात कही है जो कि बहुत कम हम सुनते हैं, और मैं इसको हाईलाइट करना चाहता हूं कि हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट या एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप के बारे में हमेशा आइडिया, फाइनेंस, मोटिवेशन में मतलब इस टाइप से हम ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन आज उन्होंने जो डायमेंशंस आपके सामने रखे हैं कि एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको एक अच्छा इंसान भी बनना चाहिए, और वो वैल्यूज़ और वो जो इंसानियत के डायमेंशंस उन्होंने बताए वो भी आपके पर्सनालिटी में इनकलकेट होना चाहिए, वो ज़रूरी है। और उसी के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ सकती है, और आप एक अच्छे एंटरप्रेनर बन सकते हैं, जो कि उन्होंने खुद अपने ज़िंदगी में ये सब किया है, और आपके सामने वो रोल मॉडल की तरह सब हाजिर भी है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ में आगे बढ़ना है तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक जो कि हमारे यहाँ पे जितने भी स्टॉल्स लगे हैं उनके जो ओनर्स हैं, जिन्होंने भी अपना नया नया स्टार्टअप यहाँ पे उनके आइडियाज़, उनका स्टॉल लगाया है, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है हमें। और उस रिस्पांस को देखते हुए मैं आपको एक प्रॉमिस भी करता हूँ कि इस बार हमने ये सब जो PSF है वो COEP के कैंपस के अंदर, मतलब कॉलेज के कैंपस के अंदर ऑर्गेनाइज किया है। उसकी पब्लिसिटी और उसका फुटफॉल देखते हुए मैं अगले साल उसे कॉलेज के ग्राउंड पे, जो कि जंगली महाराज रोड की तरफ है, तो हम वहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि आने वाले लोगों को आपके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। और तीसरी बात ये भी कहना चाहूँगा कि इस बार भी हमने सोचा था, लेकिन कुछ टेक्निकल वजह से ये पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अगले बार हम ये फेस्ट को 3 दिन का करेंगे। 2 दिन में काफ़ी क्योंकि इसमें जो इवेंट्स होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे टीचर्स वैली जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल डिफेंस में भी काफ़ी स्टार्टअप्स है, और डिफेंस के मैंने जो सुना था 450 स्टार्टअप अब भारत में हैं, तो वो भी एक अच्छा मार्केट है आपके लिए। फिर लाइटिंग स्पीच और बाकी जो इवेंट्स है, तो उसके लिए ये सब कॉम्प्रेस करना पड़ा हमें 2 दिन में। तो मैं ये मतलब 3 दिन का बनाने की कोशिश करूंगा। नहीं, मैं आपको प्रॉमिस ही दे रहा हूं, कोई उसमें गुंजाइश नहीं या उसमें कोई शक नहीं है।
तो कुल मिलाकर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो पीएसएफ के स्टूडेंट्स हैं और उनके जो फैकल्टी एडवाइज़र पीएस शिंदे सर है, उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की और एक बहुत अच्छा डिस्प्ले आपके सामने लाने की कोशिश की। सीओईपी का ये एक फ्लैगशिप इवेंट है और ये हर साल हम जनवरी में ही करते हैं, क्योंकि उस समय जिस तरह का माहौल होता है एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर जो होते हैं उनके लिए जो एक वातावरण होता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए शायद इसी अगले जनवरी में ही होगा ये। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये ज़रूर मतलब मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप सबके सामने कि कोई भी काम जो होता है उसमें ऐसा होता ही है कि उसको और अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ जगह छूट जाती है। तो आई विल एक्सेप्ट ऑल योर सजेशंस, यू कैन जस्ट गिव अस सो दैट in the next time we will come up with another modified and excellent PSF. इस बार अगर कुछ छूट गया होगा तो बिना एल्डर पर्सन ऑफ दिस पर्टिकुलर PSF फैमिली आई फील सॉरी, और मैं आपके सामने ये भी कहता हूँ। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो ज़रूरी है वो वातावरण, एजुकेशन, एन्जॉयमेंट और एंटरटेनमेंट, ये सभी डायमेंशंस को पूरा करते हुए इस फेज के हम अंतिम चरण पे हैं, और इसलिए मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ, सबका आभार भी प्रदर्शित करता हूँ और यहीं पे रुकता हूँ। Thank you, sir. Now, can I have respected Dr. P.S. Shinde, sir, our faculty advisor, to give his speech. Respected dignitaries on the dais, Sri Chandubhai Virani, sir, MD of Balaji Group, Sri Parag Pandit, sir, country head of Vivekta, respected Khon, sir, director Board of Students Affairs, the Secretary of PSF 26, Nehal Agrawal, Joint Secretary of PSF 26, Preet Damani. I am very much thankful to all these eminent personalities for sparing their valuable time for attending this function. The journey of PSF actually started 8 years before with the support of Bhaus E-Cell, and thereafter the legacy went on, and year by year we improved on all fronts, and this year it's been the 8th edition. I'm very much thankful for our various sponsors for the generous support they had provided. Our title sponsor Vivekta, and then our powered sponsor ONGC. ONGC is again year by year supporting us for this event. Other than that, we have FinIQ and other sponsors. Because of their generous support, this event could happen. In this year, if you see for inaugural function, we got eminent personalities like Dr. Parul Patel Madam, ex-group director of ISRO. Then we had Mr. Venkatesh Kulkarni, executive director of Mercedes-Benz, Mr. Vivek Tongaonkar, director of ONGC. All give their insights on this occasion of PSF 26. As we heard Sri Chandubai Virani sir, that for any startup, it is very important to connect the people, or rather going only into on regular requirements of finance and all that. Connecting the people, it enhances the strength of startup, and that is very important again to create a brand in the society. The trust among the people is very much important. We heard Parag Pandit sir giving us the insights on what Vivekta is and what is the exposure of this firm all over the world. So in this PSF 26, we had various events like lightning pitch, in which almost
We had 2 rounds, and we got for the various startup almost total funding, soft commitment we got up to 10 crores. Again, I feel it is a great achievement, and it will be really a good support for those who are budding startups coming up over here. And then we had various events like Bid Wars, then Broadscan, Spectra, then Courtroom Clash, Pitchers Valley. We had got for almost in Pitchers Valley a Shark Tank type event we had in COP. It was almost 5 investors who showed interest in investing in various startups. And then we had CTOD 2 funding and internships. We had a master class on various topics, particularly AI, then startup playbook, then personal finance, etc. were being conducted. This time we arranged a keynote session of Gaurav Taneja, and there was a good response for that also. The highlights of the PSF were internship fair arranged for students for 2 days. Hope you had enjoyed this event. We had got total 80 plus startups from all over India. We had got startups also from rural India. We had got few startups from Dhule, a private college. Likewise, we had a lot of startups. Among these 80 plus startups, the student startups were close to 10, and hope these numbers will go on increasing, and hope this startup activity will naturally enhance, it will support for a vision of developed nation by 2047. Thank you, and I really appreciate the efforts taken by total entire team of PSF 26. Hope this legacy will continue further. Thank you very much. Yes. Thank you, sir, for always guiding us. Now I would like to call upon Mr. Preet Damani for his speech. A warm good evening to everyone present here, our esteemed dignitaries on the dais, aspiring entrepreneurs, fellow students, and my dear team Pune Startup Fest 26. I, Preet Damani, Joint Secretary of the 8th edition of COEP Tech's Pune Startup Fest, truly am grateful and honored to stand before you all today. I would like to express my deepest gratitude to Mr. Chandubhai Virani sir and Mr. Parak Pandit sir for gracing us with your presence. Your journey, insights, and words of encouragement have inspired us today and will guide us along after this fest concludes. A heartfelt thank you to our title sponsor, Vivikta, and ONGC as our power sponsor for their unwavering faith and support in bringing our vision to life. I also extend my sincere gratitude to our college administration, Dr. MP Khond sir, and our faculty advisor, Dr. P.S. Shinde sir. And special thanks to my dear core team, coordinators and volunteers, whose dedication and commitment made the 8th edition of Pune Startup Fest a grand success. Special thanks to Nihal Agarwal for being my constant support and an integral part of making everything come together. The theme, Ascent of Pioneers, wasn't just a tagline, we lived it. Despite challenges and uncertainties, we kept moving forward, choosing teamwork over credit, and showing up when it mattered most. This edition made us pioneers. This edition reminds us that the pioneers aren't defined by how easy the journey is, but by the courage to take the first step and the strength to see it through. To our volunteers, coordinators, and my dear core team, the last 6 months have been extraordinary. You raised the bar, set new benchmarks, and took this edition of PSF to heights I will always be proud of. As the curtains fall on the 8th edition of Pune Startup Fest, know that this moment marks a beginning, not a goodbye. Let the memories you made be with you and be the reason you keep moving forward. You've left a mark.
not just a memory. Thank you. Thank you, Preet Damani, sir. Now, can I call the secretary, Ms. Nehal Agrawal, to give her speech? Good evening, everyone. I won't take much of your time. First and foremostly, thank you so much, the lovely audience, for being here, for being with us for the entire 2 days of Pune Startup Fest. As we arrive at the closing moment of Pune Startup Fest 26, we are not just concluding an event. We are reflecting on a journey that has grown with time, belief, and collective effort. Starting since 2019, today in 2026, what Pune Startup Fest has grown not only in terms of numbers, but in terms of impact and purpose. To summarize this edition of Pune Startup Fest, we had 80 startups. We had an infusion of 11.5 crores in all the live pitching events that we witnessed. We have had an internship fair with more than 25 company recruiters who were here to hire students, who were here to offer internships and jobs to our fellow students. For the very first time, we have had a CXO conclave where CTOs, CMOs, CEOs from different companies were there to grace the event with their presence and knowledge that all of us we have gained today. With this, we also had supporting women entrepreneurship, Pehchan, our social initiative, where we get to learn from people not even in the urban areas but even in the rural areas. And to make this happen, I would like to express my deepest gratitude to the dignitaries on dais. Thank you so much, sir, for coming, for gracing us. Our college administration, starting right from our Vice Chancellor, sir, Professor Sunil Birut, sir, then the Registrar, sir, Dr. Sonavni, sir, then coming to our always supportive and motivating Dr. MP Khon, sir, Board of Director of Students Development, and always with us, our faculty advisor, Professor P.S. Shinde, sir. As I mentioned, it started in 2019. Everybody who is present today, all our ex-core, all our core team, it would not have been possible without all of you. And the vision that all of us had dreamt, all our sponsors, our title sponsor Vivekta, our power sponsor ONGC, thank you so much for supporting us. Thank you for bringing our vision to life. All our esteemed associate sponsors, all our alumni sponsors, our esteemed alumnus of COEP Technological University, thank you so much for always guiding us. Last but not the least, Preet Damani, the Joint Secretary for Pune Startup Fest 26. Thank you so much for always being by my side to make this vision possible. Everybody, all the audience, all the startups, all the investors, all the mentors, all the innovators today sitting in this auditorium, thank you so much for gracing us. Thank you so much for gracing this event of Pune Startup Fest 26. As mentioned previously, this is not an end, this is the beginning. Living to our vision, ascent of pioneers, sticking by our theme, let this ascent begin. Thank you so much. Before concluding this edition of Pune Startup Fest, I would like to once again thank our sponsors, Vivekta, the title sponsor, ONGC, the power sponsor, SRGH, a strategic partner for Pune Startup Fest 2026, and all our alumni sponsors. Thank you so much for everyone for being here.
अरे मैं सारे कितने बार बोलूँ